Hello dear students, welcome back to the Crystal International Public School, Standard 7, Subject Science, Chapter 6, Physical and Chemical Changes. We have seen up to this Chapter 5, okay, acid, bases and salts in the last video, in the last chapter. Now I am going to take your next chapter, that is Chapter 6, Physical and Chemical Changes. So let's start about it. Every day you come across many changes in your surroundings. Yes, these changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. So many activities you did over here at your home or surroundings, it happens that is into the change into the shape also, may I say, because whenever you dissolve the sugar into the water, then sugar become sugar like say the cube, okay, it seems like the cube but and solid form, and then after it will convert into the liquid form, and dissolved. How it is possible? Then about curd I can say, तो कर्ड में भी क्यों होता है, सौर क्यों हो जाता है? फिर मैं बोल देती हूँ कि मिल्क जो बिगड़ जाए तो आप टेस्ट करो तो कैसा कैसा खट्टा खट्टा लगता है ना, बहुत बिटर टेस्ट आता है ना। फिर स्ट्रेच रबर जैसा है, लेकिन वो स्ट्रेच क्यों होता है? सो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो ये जो सारी हुई, रबर की हुई तो वो फिजिकल हुई, कर्ड की हुई तो वो केमिकल हुई कि नहीं, केमिकली वो सौर टेस्ट बदलाया कि चेंज हुआ कि नहीं? यस। So make a list of 10 changes you have noticed around you. You have to make a list of these 10 changes. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds of, physical and chemical. मैंने बोला आपको कि शुगर क्यूब जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, इट मीन्स उसका शेप गायब हो गया, चेंज हो गया, इट मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो गई, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स वो पानी में मिक्स हो गई शुगर, तो वो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। मैं कर्ड की बात करूँ, ओके, तो मिल्क में हम थोड़ा बहुत 2 or 3 drops I will add the buttermilk, and then after keep it for a whole night, then you will get the curd into the next day in the morning. Okay, it means what कि वो उसमें क्या हुआ, ऐसा तो क्या हुआ कि वो कर्ड में चेंज हुआ, क्या हुआ उसमें पूरे के पूरी नाइट में क्या हुआ, तो वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज हुई कि नहीं, केमिकली चेंज हुआ कि नहीं? यस। So there are two kinds of, that is physical and chemical changes. Okay? ये आपको बताया गया है पेपर पीसेस। पेपर पीसेस में क्या कहा गया है? Let's see the activity ahead. Physical changes. First topic is physical changes. Let's start about it. Okay, physical changes. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but
इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? देखो कहाँ क्या कहा गया है कि इतने साइज का एक पेपर लेना है, उसको 4 पीसेस में कट करना है. ओके, लेट मी चेंज द कलर, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर. Okay, you have to cut them into the 4 pieces, and then after these 4 pieces again cut them into another 4 pieces, means this 4 here, here and here, and arrange them onto the table or onto the floor at your home and make again the original piece. जो original piece था उसको आप वापस, ये जो पीसेस हुए ना, तो वो पीसेस को ज्वाइन करके वापस उतने ही साइज का और वो ऐसा ही पीस बनाना है आपको. आर यू एबल टू डू इट? नो, वी कांट एबल टू डू इट. दिस 4 pieces, it means how many pieces are there? 4 4 4 4 means 16 pieces. I can't join them and make a original piece. Then have you seen over here any change into the pieces? फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आया? यस. क्या चेंज आया कि उसका जो शेप है, उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, जो था वो सारे के सारी चेंज हो गई. हो गई कि नहीं? यस. सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. कलेक्ट द chalk dust lying on the floor. Let me change the color. Okay. Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom. Crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Do you recover chalk from the dust? हाँ, बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे कि जो चौक है तो वो चौक को आपको उसकी डस्ट बनानी है. ओके, डस्ट बना के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें पानी ऐड करना है और पेस्ट बनानी है. एंड देन आफ्टर ये जो पेस्ट है उसको रोल डाउन करके अगेन आपको चॉक बनाना है. लेट इट टू बी ड्राई. आर यू एबल टू मेक दैट टाइप ऑफ चॉक? नो, यू कांट. ओके, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई या नहीं? टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Ice plus common salt. Does the water become solid acid ice once again? Yes. वो बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. Yes. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? Yes, droplet मिलते हैं ना आपको. बॉयल वाटर जो है वो बॉयल वाटर के ऊपर जो आपको पान रखना है और उसकी जो स्टीम है वो पान को टच होगी. ओके, तो थोड़े बहुत डिस्टेंस में रखना है, उसको पूरा का पूरा कवर नहीं करना. ओके, एंड देन आफ्टर यू विल सी द ड्रॉपलेट इज प्रेजेंट देयर. ओके, एक्टिविटी 6.5. Be careful while handling a flame. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Yes. Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color?
In activity 6.1 and 6.2, you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. Okay, so in activities 6.3 and 6.4 में क्या हुआ? Water changed its state from solid to liquid and from gas to liquid. Okay, in 6.5 activity, the hexo blade changed color on heating. So इससे हमें क्या मिलता है? That properties such as shape, size, color, state of the substance are called its physical properties. तो properties means such as shape, size, color, state of substance, वो चेंज हो तो उसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं, और ऐसी जो प्रॉपर्टीज हो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, a change in which a substance undergo a change in its physical properties, that is called physical change. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आया, उसकी शेप में, साइज में, कलर में, स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज आया, तो उसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज, दैट इज फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ये जो चेंज हुआ, फिर हम उसको रीचेंज, उसको उसने अपने आप से जो ओरिजिनल पीस था उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल. So let us now consider the other kind of the changes, that is chemical change. अब chemical change क्या है? Let's see about it. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. Iron gets off parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere. For some time, in the kitchen also, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited. देखो, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना. You might have seen these all the things. Yes or no? Okay. So rusting iron, आयन जो है वो ऐसे मेटल है, इफ यू विल कीप इट into the atmosphere, moist atmosphere, then it will started to corrode. Otherwise it will be having rust on the surface of it. Okay, so that's why we are coloring that iron materials, iron substances, iron things, that they may not corrode. Okay, so there are so many articles that existed around us that made up of iron, that into the garden you can say that chair is there. In our home also so many articles are made up of iron also, and we see that the brownish colored powder are formed onto it, so that is called rust. Okay, that is called rust. तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ. Iron gets of parks or farmlands and benches. Yes, iron gates of park. पार्क का जो गेट होता है वो भी आयन का होता है. इफ योर आपके घर में जो गेट होगा, एंट्रेंस होगा, गेट होगा, जो वो आयन का होगा, देन इट मस्ट बी रस्टेड. रस्टेड होगा. क्यों? क्योंकि नाउ डेज रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, सो आयन इज
reacting with the moist atmosphere very soon. Okay, suddenly. So iron gates parks or farmland. Iron benches kept in a lawns and gardens. iron benches जो होती है वो भी रस्टेड होती है कि नहीं? Yes. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. जो उसको आयन को ओपन रखा जाएगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो आयन के बने हुए हैं वो रस्टेड हो ही जाएंगे. तो किचन में भी ऐसे बहुत सारे वेसल्स होंगे, कंटेनर्स होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसमें रस्ट क्रिएट हो गया. इट मीन्स व्हाट? देयर इज अ केमिकल चेंजेस. ओके. देखो, इन किचन ऑल्सो अ वेट iron pan often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron. जो रस्ट हो गया है वो आयन नहीं है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड. वो डिफरेंट ही है आयन से जो उसमें डिपोजिट हो गया है. रस्ट इज नॉट आयन. So let's consider a few more changes where new substances are formed. Magnesium ribbon. Magnesium ribbon. So this is very risky activity, but let's start about it. Get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame and it burns with a brilliant white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. मैग्नीशियम रिबन को जब आप बंट करोगे तो वहाँ पे वाइट फ्लेम क्रिएट होगी. तो ये जो वाइट फ्लेम वहाँ पे क्रिएट हुई है वो भी केमिकल चेंजेस है. एंड वाइट फ्लेम क्लीन होने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी. तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऐश में. तो ये जो पाउडरी ऐश हमें मिला वो कैसे मिला? डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? ऐश मैग्नीशियम रिबन के जैसा दिखता है? नहीं. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू द मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो वाइट लाइट आपको दिखी, वाइट लाइट की फ्लेम आपको दिखी और वहाँ पे जो फ्यूम्स क्रिएट हुई, that is called magnesium oxide. Okay, the equations here are different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies become no attempt should be made to balance chemical equations at this stage. No need to it, otherwise you have to keep over here 2 mg. 2 mg plus O2 gives you the 2NGO. It will come into your higher standard. Now collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture well. Taste the mixture with blue and red litmus paper. ऐश को आपको वाटर में ऐड करना है, उसको स्टर करना है और यू हैव टू check the solution with the red litmus paper and blue litmus paper. Does the mixture of turn red litmus paper into blue? Does the mixture turn blue into red? So on the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? Classify हम कैसे करेंगे कि acidic and basic? Okay, giving you 2 minutes to read this paragraph.
Okay. Okay, so on dissolving the ash in water, it forms a new substance. हमने कितनी सारी एक्टिविटीज की देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, शेप, साइज, कलर चेंज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल चेंजेस. नाउ वी आर वाचिंग केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस में क्या है? हमने कौन सी एक्टिविटी की? आयन की. ओके, आयन कैन बी रस्टेड, कोरोडेड. एंड नेक्स्ट इज व्हाट दैट वी हैव सीन, दैट इज मैग्नीशियम रिबिन. मैग्नीशियम रिबिन में क्या हुआ कि जैसे ही मैं बंट करूँगी मैग्नीशियम रिबिन, इट गिव्स यू द वाइट लाइट कलर्ड फ्लेम. ओके, and with the equation or with the reaction Mg plus O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद gives you the magnesium oxide and ash will be separated. फिर it will convert into the ash. ये जो ash आपको मिली, that ash and water you have to mix it up and make a aqueous solution. अब ये सॉल्यूशन आपको बनाओगे और उसमें रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर यू हैव टू add into it. Then what happened to that? हाँ, क्या होगा? एनी चेंज आएगा? वो यहाँ पे बताया गया है. ओके, नाउ दिस वाटर यू हैव मेक अ सॉल्यूशन. Then on dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equations. That is, magnesium oxide plus water gives you the magnesium hydroxide. क्या मिलेगा आपको? Magnesium hydroxide. And this magnesium hydroxide is basis. So as you have already learnt, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed by burning of magnesium. So magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. ओके, तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. तो पहले मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला. तो दो सॉल्यूशंस मिले कि नहीं? और दो सॉल्यूशंस डिफरेंट है. ओके, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला वो मुझे बेस मिला. ओके, तो मुझे बेस मिला, तो बेस में मैं कौन सा लिटमस पेपर ऐड करूँगी तो कलर चेंज हो जाएगा? सोचो. If it will be base, then if red litmus paper is added into it, then it will convert into the blue litmus paper. So it gives you the basic form. Okay. So we have seen up to this about this chapter, and afterwards we will see all the topics that is converted over here. Let's see, all the topics are depending on chemical changes only and physical changes. So rusting of iron is also given over here. All the chemical crystallization also given over here. How to make the crystallization. All the topics we will cover into our next topic. Not all the, some of the topics. And also I will revise you all the topics into my next video. I hope that you understand all the topics, and please see at home these videos. We are making the videos. Why? Because if you don't understand any topic into the Zoom lecture online, then you can see video and you can understand that topic. That's why we are making the video. And this is beneficial for you only. If you will see video, then it is beneficial for you. जो आप लोगों ने जूम में पढ़ा, तो जूम में कुछ पढ़ा तो सही ना,
whatever you have learned into the Zoom, if you don't understand any topic, then you can see the videos, and from the videos you can understand. Yes or no? Because in the Zoom we cannot cover all the topics in a day. So whatever topics we have learned, if you will see the Zoom video lecture, then it will be revised for you. Revision हो जाएगा आपका, और it will be very useful for you only. So I hope that you understand, and if you have any query, then please note down in your notebook, and we will keep one lecture for you to solve your query. Okay, bye everyone. Take care everyone. Bye.